Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your hostess, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 23421050। हमारे साथ चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा आनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Switzerland's banking giant UBS agrees to take over troubled Credit Suisse in emergency rescue deal. Domestic share markets snaps 2 days of winning streak to end over 0.5% lower. Sensex slips 361 points to close below 58,000 level, while Nifty drops 112 points to settle below 17,000 mark. And oil prices fall to lowest in 15 months over fears of global banking meltdown. स्विट्जरलैंड का प्रमुख बैंक यूबीएस एक आपातकालीन बचाव समझौते के तहत संकटग्रस्त क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के लिए हुआ तैयार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों में लिवाली के बाद कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज फिर हुई गिरावट। प्रमुख सूचकांक .5% से अधिक घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 361 अंक लुढ़का 58,000 के स्तर से नीचे आया और निफ्टी भी 112 अंक घटकर 17,000 के स्तर से नीचे फिसला। और वैश्विक बैंकिंग संकट से तेल के दामों में गिरावट, 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर आए भाव। The Swiss National Bank has announced that country's banking giant UBS would be taking over embattled lender Credit Suisse. The announcement came after a weekend of emergency talks in Switzerland between the two banks and the country's financial regulators. The Swiss National Bank said the deal was the best way to restore the confidence of financial markets and to manage risk to the economy. The deal will see UBS acquire Credit Suisse for $3.23 billion. Swiss President Alain Berset said that the Swiss Federal Council welcomed the takeover as it was the best solution to restore and strengthen market confidence in Credit Suisse and the Swiss Financial Center. Swiss government and banking officials had been locked in urgent talks to rescue the embattled lender, which was given a $54 billion lifeline by the country's central bank this week. Swiss Finance Minister Karin Keller-Sutter said that the government in Bern had agreed to provide guarantees of up to 9 billion Swiss francs to underwrite the takeover. But Keller-Sutter said that these guarantees would apply only to a very specific portfolio which UBS is now taking over. She also said that the guarantees would only start to apply if UBS's losses connected to the takeover exceeded 5 billion francs.
The US Federal Reserve and other global central banks also sought to ease fears through a coordinated effort to increase liquidity in the banking sector. The British, Canadian, Swiss and EU central banks are reportedly involved in the effort to step up access to dollars in swap line operations. So Shishir, what is your take on this whole story? There are three issues. Number one, when we talk about Credit Suisse and when it is being taken over by UBS, that very clearly shows that the government, the option before the government was either to go for nationalization or handing over to the UBS. Nationalization means taking over all the losses. And also it would have given a different kind of signal to the market. But when UBS is taking over and when the government is saying that if the losses exceed 5 billion, then only that will be a kind of relief kind of thing to the UBS, that is a very clear roadmap for the UBS thing. At the same time, we also have to think about what is happening in US, whether we talk about Silicon Valley Bank or Signature Bank or any other bank which has gone bust. So now the option before Silicon Valley Bank is to divide it into two, and one part to be taken over and the other part is sold to someone else. That is one option is being considered. But among all this development, the most important thing is that the Federal Reserve is meeting today, tomorrow and day after. And that will give a signal to the global market. If they continue going for rate hike in the manner which they were doing so, that will create panic in the market. But now the expectation is that they may not go as aggressive as they were. And the second thing is that they may not increase the rate by 50 basis point or they may go by just 20 basis point. If it happens, there will be some kind of relief rally in the global stock market. शिशिर जी, यहाँ पर 2008 के बैंकिंग संकट को हम ध्यान में लाना चाहेंगे, आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इस बार का जो बैंकिंग संकट है, वैश्विक स्तर पर कई बैंक दिख रहे हैं कि वो घेरे में आ रहे हैं। ये वास्तव में कितना बड़ा आयाम लग रहा और इसके प्रभाव कहाँ, किस रूप में, किस हद तक पड़ सकते हैं? देखिए, 2008 की अगर हम लोग बात करें तो उस समय जो संकट था वो सब प्राइम क्राइसिस था। सब प्राइम क्राइसिस को बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में कहें तो घटिया कर्ज, यानी कि वो कर्ज जिसके लिए आपके पास जो कोलेटरल होना चाहिए, जो गिरवी रखी हुई चीजें हैं, वो उतनी कीमत की नहीं है जो कर्ज डूब जाने या फंस जाने की स्थिति में उसकी भरपाई कर पाए। अभी के समय में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा खेल इंटरेस्ट रेट का हुआ है। खासतौर पर मैं अमेरिका की बात करूं तो कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता गया तो आपको जब लो था तो आपको काफी फायदा हुआ और जब हाई है तो आपको नुकसान होना शुरू हुआ। और चूंकि आप एक नीश बैंकिंग में थे तो आपके लिए ज्यादा उसका असर दिखा। जहां तक सवाल क्रेडिट स्विस का है, उनके लिए संकट की स्थिति अचानक नहीं आई है, ये काफी समय से दिख रहा था और अब उनकी परेशानी बढ़ी है। लेकिन जिस तेजी से स्विस अथॉरिटी ने इस पर कार्रवाई की वो वाकई में काबिल तारीफ है और ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक इंडिकेशन है कि हम 2008 जैसी स्थिति को दोबारा नहीं होने देंगे। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि फेडरल रिजर्व की बैठक जो कि मंगलवार और बुधवार अमेरिकी समय के हिसाब से होने हैं, उसमें क्या कुछ फैसला होता है। और अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर को लेकर के बहुत आक्रामक ना हो और यदि वो सिर्फ 10 या 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करे या ना बढ़ोतरी करे तो उससे काफी हद तक शेयर बाजार को एक कह सकते हैं कि एक राहत की सांस जो है वो ले पाएगा। Shishir, we know that the Silicon Valley Bank affected the startups in India, at least about 20 of them from India. We'll talk about the effect, if at all, of the Swiss National Bank. For the moment, we have Lokesh Kumar calling us from Bihar. जी लोकेश जी, सवाल पूछें। हेलो लोकेश जी, आप जुड़ चुके हैं हमसे, सवाल पूछिए। नहीं, मुकेश, अच्छा सॉरी जी मुकेश जी, सवाल पूछा जाए। जी टाटा, समझ गए? यही नहीं समझ लीजिए, ये ऑन बैंकिंग भी है। हाँ जी, पूछिए ना, अपना सवाल पूछिए। समझ गए ना, ऑन बैंकिंग है पूरी ये इंडियन रिजर्व बैंक। Well, I think there is some problem there. We have N.R. Prasad right now, and he is calling us all the way from Bangalore. Yes, Mr. Prasad, please ask a question. Hi, good evening. Happy Ugadi in advance to Market Mantra team. Thank you. Yes. My two questions. One is there is a meeting fixed on the 23rd. By the federal meeting is also there, plus Bank of England is also there on 23rd. So what will be the likely outcome and how that would impact
on Indian market. That is first question. Question is, FPI inflow is about 11,500 crore till yesterday, maybe till Friday. What would be the impact? In spite of this, market fell today. Okay. Now coming to the first question, that what kind of result we are expecting from the Federal Reserve as well as the Bank of England meeting on 22nd and 23rd. We believe that the Federal Reserve may not go as aggressive as they were doing previously, and there is also expectation that they may not go at all to hike the interest rate. If it happens, that will be a very positive news for the global market. At the same time, when we're talking about Bank of England or European Bank, please remember that they are in a very bad situation in terms of economy. The things have improved, but not that much. So I believe they may not go as aggressive, and their focus will be at this time to provide some kind of relief rather than just controlling the inflation. Of course, we know that inflation is high, and any of the central bank would first prefer to check the inflation, and but considering the market situation and considering the global economy situation, they would prefer to lower rate hike or no rate hike at all. All right, back to my and the second question was about the FPI outflow. When the market is down, and the most worrying factor today was that when the Nifty went down below 17,000 marks, that's showing that there is still some more weakness in the market, and that means there will be more FPI outflow in the coming days. All right, back to my previous question, Shishir, about the fact that we know about the Silicon Valley Bank. It proved to be a disaster or kind of a deterrent for about 20 startups in India. What about the effect of this Swiss National Bank issue? Generally, Swiss Bank conjures up a very negative image anyways, but what do you have to say about this story? What the effect of it will have on the Indian markets? Yeah, there are two things. When we talk about the Silicon Valley Bank or the US Bank, since they were the niche bank and the startups one, the good thing is that most of the Indian banks have started giving some kind of alternative to all the startups. If they want to do the banking rather than going to US all the way, they can do the banking at the same terms from the GIFT City. They have the branches, and if you can see today advertisement, one of the nationalized bank has come out with an advertisement especially for the startups. So that is one thing, what you can call it as the Indian banks are taking immediate step. Now coming to the Swiss bank impact, of course the Swiss bank impact will have a different kind of situation. It is not going to impact any specific sector per se, but in terms of the market there will be some kind of uneasiness because one particular or one big bank is falling. But the good thing is that UBS has already announced taking over the Credit Suisse. That will give some kind of comfort to the market. But still, I believe that there will be some kind of uneasiness in the market. श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज हमारा फोन इन कार्यक्रम है, यानी हमारे कार्यक्रम में आप फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2342-1050. इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर आज जुड़े हैं दिल्ली से राकेश. राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. सवाल पूछिए. हेलो राकेश जी, आप जुड़ चुके हैं हमसे. सवाल पूछिए. लगता है हमारा संपर्क कहीं कोई तकनीकी त्रुटि आ रही है. अतनु साहा हमारे साथ हैं कोलकाता से. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार. गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज व्हाट प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट वर्ल्ड जीडीपी सिचुएशन एंड इट्स कंट्रास्ट विथ बैंक इंटरेस्ट करंट. थैंक यू. Okay. When we talk about the GDP situation, if you can remember, all the agencies earlier forecasted some kind of slowdown in the global GDP rate for the calendar year 2023. And at this moment, when these projections were made, the banking situation was not factored in, but now that has been factored. And what we believe that the global GDP will see some kind of further moderation because of the banking situation, or rather I would use the word banking crisis in various parts of the world. So there will be some impact. In terms of interest rate, at this moment most of the central banks are going for aggressive rate hike because for them the major concern is the inflation.
If the inflation is high, of course, they will go for raising the interest rate. But considering the banking situation, our understanding is that they may not be as aggressive as we have seen during the last 2-3 months. All right, we're now joined by Mohan Kumar, who's online and calling us from Gwalior. जी मोहन जी, सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल है सर, ये हायर इंटरेस्ट रेट सिनारियो में पीई रेशो का कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, क्यों सर हायर इंटरेस्ट रेट में पीई रेशो का कॉन्ट्रैक्शन? देखिए, जब कभी भी ब्याज दर बढ़ता है तो वो शेयर बाजार के लिए बुरी खबर होती है, क्योंकि वो शेयर बाजार में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसा जो है निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। और अगर आप गौर करेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने जब देखा कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी, भारत से आउटफ्लो हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है आपके प्राइस अर्निंग रेशियो पे पड़ेगा। जब चूंकि प्राइसेस कम हो, खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट में जो सेलिंग चल रही है और प्राइसेस कम हो, तो वहां पर आपका रेशियो जो है वो इम्पैक्टेड होगा। तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना पी रेशियो के लिए उसी तरीके से स्थिति लाता है जिस तरीके से शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ती है। फरीदाबाद से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर डॉक्टर दिनेश। स्वागत है डॉक्टर दिनेश, सवाल पूछें। हाँ सर, मैं स्ट्रेट कमिंग टू द क्वेश्चन जी। सर, ये सिलिकॉन वैली बैंक में मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि केवल अप्रोक्सीमेटली 20 स्टार्टअप्स हैं जिनको उन्होंने क्रेडिट मतलब कुछ दे रखा है। तो मेरा कहना ये है सर कि क्या केवल एक 20 स्टार्टअप को अगर तो इतना अफेक्ट कर देगा बैंक के फेलियर हो जाए? देखिए डॉक्टर दिनेश, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जिसका अगर कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में नहीं है, तो वो सिलिकॉन वैली बैंक जो कि एक स्पेशलाइज्ड बैंक था, एक नीश बैंक था जो कि स्टार्टअप्स को खास तरह की सहूलियत देता था, उनको वो तमाम तरह की सुविधाएं देता था, कई तरह की रियायतें भी देता था। और इन स्टार्टअप्स के लिए अमेरिका में अपने स्टाफ को पैसा देना हो, सैलरी देनी हो या कुछ खर्च करने हो, या फिर एंजल कैप जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे आने हो, वो इसी चैनल के थ्रू आता था। तो आपको लगेगा कि 20 की संख्या, ये 20 भारतीय स्टार्टअप्स हैं और इन स्टार्टअप का ठीक ठाक पैसा जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से सरकार ने समय रहते जो है उनसे बातचीत करी और इसका समाधान निकाला। अभी के समय में स्थिति यह है कि गिफ्ट सिटी में कई जो बैंक्स हैं वो फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं, और इसके अलावा एक सरकारी बैंक है जिन्होंने खास तरह की स्कीम भी शुरू की है जिससे कि स्टार्टअप को अपने फंड को लेकर के परेशानी ना उठाना पड़े। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अमेरिकी जो रेगुलेटर है वो सिलिकॉन वैली बैंक को बेहतरी या उसे कहा जाए कि उसे पटरी पर लाने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो समस्या है ये अगले कुछ दिनों में सुलझ जाए। शिशिर जी, यहाँ पर एक सवाल है तो आसान सा, लेकिन इसके जो आयाम है वो पेचीदे दिख रहे हैं। वो इस स्तर पर आपने भी कहा कि ब्याज दर बढ़ने से बैंक प्रभावित हो रहे हैं, तो ये ब्याज दर जो केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे हैं उससे इन बैंकों की कार्य क्षमता या उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ रहा है जिससे वो संकट में आ रहे हैं? मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि ब्याज दर बढ़ने का असर मैंने कहा था शेयर बाजार पे, क्योंकि शेयर बाजार का सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता है तो ब्याज दर होता है। जी माफ कीजिएगा। जहां तक सवाल है बैंकों के ऊपर, अब देखिए बैंकों के लिए क्या है, बैंक आपको कर्ज देते हैं जिस पर वो ब्याज कमाते हैं, बैंक आपसे जमा लेते हैं जिस पर आपको ब्याज देते हैं। तो आपको कर्ज दे करके जो आप उनसे ब्याज कमाया आपसे, उसके जरिए वो जमा के ऊपर देते हैं। अब जब ब्याज दरें बढ़ती है तो कर्ज की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो कर्ज की रफ्तार जब धीमी पड़ेगी और जमा पहले से ही आपके पास महंगे में है, तो आपका जो इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ब्याज दर का बढ़ना एक सीमा के बाद बैंकों के लिए इस तरीके से नुकसान होता है कि कर्ज की रफ्तार घट जाती है, जमा ऊंचे ब्याज दर पर लिया हुआ है, तो एक मिसमैच बनता है जो उनके बैलेंस शीट पर असर डालता है। राइट। आइए हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। संजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, दिल्ली से आप हैं, लाइन पर बने रहिए। पहले हम आपको शेयर बाजार लिए चलते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां पिछले 2 सत्रों में तेजी हमने देखी थी, आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन फिर से गिरावट का क्रम शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच निवेशकों ने आज बिकवाली की। बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 361 अंक यानी 0.62% घटकर 57,629 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक यानी 0.65% कम होकर 16,988 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों लगभग 1% नुकसान में रहे। Domestic share markets today snapped 2 days of winning streak to end over 0.5% lower amid mixed global cues. However, the key indices paired losses, making sharp recovery from intraday losses. The fall in domestic equities was attributed to worry among investors about contagion risks in the global banking system, despite a historic Swiss-backed acquisition of troubled Credit Suisse by UBS Group offering some relief. The Sensex at the Bombay Stock Exchange slipped 361 points or 0.62% to close below 58,000 level at 57,629. The Nifty at the National Stock Exchange dropped 112 points or 0.65% to settle below 17,000 mark at 16,988. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices shed 1% each. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 23 firms fell while 7 rose. Hindustan Unilever gained 2.5%, followed by ITC up by 0.8% and Kotak Bank added 0.5%. On the other hand, Bajaj Finserv plunged 4.3%, Bajaj Finance 3.2% and Wipro declined 2.5%. In sectoral indices at the BSE, except FMCG sector, which gained 0.6%, rest 19 sectors logged losses. Metal sector fell 2.2%, followed by commodities and IT sector tumbling 1.3% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,072 companies rose while those of 2,571 companies fell. A total of 109 shares remained unchanged. हम श्रोताओं को वैश्विक बाजार भी लिए चलते हैं। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। हांगकांग का हैंग सूचकांक सबसे अधिक घाटे में रहा, इसमें 2.7% की कमी आई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 1.4% घाटे के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की कमी आई। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो शुरुआती घाटे के बाद समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4%, फ्रांस का CAC 40 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.6% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। एंड नाउ वी हैव ऑनलाइन संजीव कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी संजीव जी, सवाल पूछें। जी नमस्कार। मुझे ना 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी बैंक में जब आप कोई FD प्री मैच्योर करवाते हो तो हर एक बैंक का कुछ अलग अलग होता है सिस्टम। तो ये कोई यूनिफाइड मैकेनिज्म है जहां हमें पता चल कितना लॉस हो रहा है या कैसे हर एक बैंक का कोई मतलब क्या कुछ का कैसे कैलकुलेशन होता है? ओके। और सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल कुछ है? संपर्क हमारा नहीं, संपर्क में कुछ देखिए, जहां तक सवाल फिक्स डिपॉजिट का है, वो एक तरीके का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो एक खास समय के लिए है। अगर आप उस समय के पहले आप उसको फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं फिक्स डिपॉजिट तोड़वाना, तो ऐसे में बैंकों के लिए क्या होता है कि जो एक निश्चित समय के लिए उन्होंने पैसा कहीं पे लगा रखा है वो वापस लेकर के आपको देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कमाई के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो आपको जो ब्याज दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी वो कमी कर देते हैं। अब ये सवाल है कि यूनिफाइड है या सभी बैंकों का अपना अपना, तो हर बैंक के जो अपने असेट लायबिलिटी मिसमैच होते हैं या असेट लायबिलिटी जो उनकी कमिटी होती है वो इस बारे में फैसला करती है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, समय से पहले आप पैसा वापस लेते हैं, तो आपको कितना पैसा या जिसे कहा जाए कि कितने ब्याज से आपको हाथ धोना पड़ेगा। Many investors who've been think FD is very, especially senior citizens consider FD as a very nice safe bet for them. Also earlier the percentage was around 5.5. Many of the old FDs were at that percentage. Now the interest is about 7% plus. So I think that kind of resonates many people's queries as well.
Yeah, certainly, because see, the bank fixed deposits, especially the public sector bank fixed deposit, are very safe and secure. Yes. One is that there's also a kind of insurance cover up to 5 lakh rupees in case the bank falls. We haven't seen that kind of situation when the public sector bank has gone burst. So fortunately, we have that kind of situation. The other thing is that since the principal and the interest is almost guaranteed kind of thing. Yes. And interest is very high in many of the public sector bank at this moment. Yes. It is going more than 7%. Yes. And if you go to post office, it is also very good interest rate. So certainly things are much better in terms of deposit. The only thing is that when the interest rate will come down, then the rate on डिपॉजिट विल ऑल्सो कम। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गाजियाबाद से गौरव, लाइन पर बने रहें गौरव। हम सवाल आपको कुछ खबरों के बाद आपसे सवाल पूछेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के ऋण या देनदारियों की कुल राशि लगभग 1 अरब 55 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 57.3% है। श्रीमती सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि इसमें से वर्तमान विनिमय दर के अनुसार 7,03,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज अनुमानित है और ये सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% है। जी, नाउ वी आर जॉइंड बाय गौरव फ्रॉम गाजियाबाद। जी गौरव, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। गुड इवनिंग। जी जी, यस Sir, next year is election year, so government is going to spend a lot of money on infrastructure and other activities. So it should give a boost to Indian economy, despite the fact that the global scenario is not very good. So how do you see earnings in this financial year end and also next year first quarter? Is it going to be improved for Indian economy, Indian companies, better balance sheet, or you see a depression due to higher interest rate in earning of Indian companies? Thank you. There are two situations when we talk about the higher spending on infrastructure, and if you take the number which the government has announced in the budget, it is more than 10 lakh crore. And if I take the capital creation allocation for the capital creation, that takes the total amount to 13 lakh crore plus. So that is something which the government is spending on infrastructure, or you can say capital expenditure. So that capital expenditure will have some kind of impact on 2 or 3 sectors specifically. One is, of course, the infrastructure companies, and the second one is the capital goods company. The negative news may come from the banking sector because of the volatility in the interest rate, and when the interest rates are high, then the credit flow will be affected, and that's going to impact the interest rate there. So banking sector will be slightly on a advantageous side. So if the infrastructure sector and the capital goods sectors are doing well, then there are FMCG sector. It's also expected because people will have some money in the hand, so they will spend on buying FMCG. So FMCG sector is another sector. The automobile sector may not see that kind of increase because of one region or the other region, and the most important reason is that especially in the private sector, the things are not going well. So if you ask for a sector specific, my suggestion would be infrastructure and the capital goods. All right. Let's take a look at oil prices now. Well, oil prices today fell to their lowest in 15 months on concern that risks in the global banking sector and a potential increase to U.S. interest rates could spark a recession that would sap fuel demand. The slide in oil comes despite the historic deal by Switzerland's largest bank, UBS, to buy Credit Suisse in an attempt to rescue the country's second biggest bank. In intraday trade, Brent crude was trading at around $71.88 per barrel, while WTI crude price was at $65.72 per barrel when reports last came in. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 237 रुपए बढ़कर 59,620 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 222 रुपए बढ़कर 68,723 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चले तो वहां भी सोने और चांदी के मूल्यों में तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $2,004 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $22.58 प्रति औंस पर अंतर्दिवसीय कारोबार में चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines.
Switzerland's banking giant UBS agrees to take over troubled Credit Suisse in emergency rescue deal. Domestic share markets snapped 2 days of a winning streak to end over 0.5% lower. Sensex slips 361 points to close below 58,000 level, while Nifty drops 112 points to settle below 17,000 mark. And oil prices fall to lowest in 15 months over fears of global banking meltdown. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. Namaskar.